नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अभी हमने कैपेसिटर देखा है। कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट जो होते हैं, एक प्लेट को चार्ज दिया जाता है विच इज इंसुलेटेड, एंड अदर प्लेट जो है दैट इज अर्थ। सो द इंसुलेटेड प्लेट get positive charge, and other second remaining which is earth, that plate gets negative charge. So now when we can discuss the energy stored in capacitor, इसका मतलब storing of charge। अभी चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे लेके जाना, तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट जो होती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालकर नेगेटिव प्लेट को देना है। तो इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, उसके लिए एनर्जी लगेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगी, और उसके बाद वो निगेटिव प्लेट को एनर्जी देना है। लेकिन ऑलरेडी निगेटिव प्लेट मतलब दैट इज नथिंग बट अगेन स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वहां भी इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली यू हैव टू प्लेस देयर। सो दोनों केस में वर्क इज रिक्वायर्ड, और ये वर्क जो है, दिस वर्क इज स्टोर्ड, दिस वर्क इज बेसिकली डन बाय द बैटरी, एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो चलिए देखते हैं। A capacitor is a device used to store energy. Charging a capacitor means transferring electrons from one plate of the capacitor to the other. Hence, work is required by the battery in order to remove the electrons against the opposing forces. These opposing forces arise since electrons are being pushed to the negative plate, which repel them, and electrons are removed from the positive plate, which attract them. In both the cases, the forces oppose the transfer from one plate to another. This work done is stored in the form of electrostatic energy in the field between the plates, which can be recovered by the discharging the capacitor. So see in the diagram, here we have taken capacitor C, and here battery denoted as V plus minus, which is a DC source. So consider a capacitor of capacitance C being charged by DC source of V volts as shown in diagram. During the charging, let small q be the charge on the capacitor. अगर चार्जिंग शुरू है तो इसमें कुछ तो चार्ज स्टोर होगा, सो दैट इनिशियल चार्ज स्टोर्ड कंसिडर एज स्मॉल q, एंड v be the potential difference between the plates. So relation we have that capacity C is equals to q upon charge upon potential. So यहाँ में हमने चार्ज स्मॉल q कंसिडर किया है, तो स्मॉल q upon v. Now a small work is done to transfer small charge dq between the plates. उसके बाद अगर छोटा सा चार्ज ट्रांसफर करना है तो उसके लिए छोटा सा वर्क डन होगा, और वर्क डन इज गिवन बाय चार्ज इनटू पोटेंशियल. सो वर्क dw is equals to potential v into charge dq. Now again, instead of v we can use v is equals to q upon c, that is the from this relation. So here let us see next charge, that is q dash upon c. Instead of v, q dash upon c and dq as it is. So this is small work done. Now therefore total work done to transfer charge is w is equals to integral dw. मतलब total work is integration of dw from charge 0 to maximum charge capital Q. So value of dw is q dash upon c dq. So w is equals to integral from 0 to q dash by c dq. So here capacity C is constant taken outside 1 by c, and integration 0 to q dash dq. अभी q dash की कैपेसिटी और q dash की इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला q dash raised to 2 upon 2.
and limits are 0 to capital Q. So as it is 0 to capital Q. Now replacing this Q dash by capital Q, we get half as it is outside and 1 by C, and instead of Q dash there is capital Q. So half Q square by C. So this work done is stored as electrical energy U, and therefore we can say U is equals to half Q square upon C, where Q that is charge and C is the capacity. So total work done is that is electrical energy U is equals to half Q square by C. तो अभी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या देखा, U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C. ये हमको एक्सप्रेशन अभी मिल गया है, लेकिन हम और डिफरेंट फॉर्म डिराइव कर सकते हैं क्या. आल्सो कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू चार्ज Q अपॉन V, ये रिलेशन तो है. तो इससे Q इज इक्वल्स टू CV ये यूज कर सकते हैं. तो यहाँ Q स्क्वायर है, सो देयरफॉर U इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज Q स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर दैट इज C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन V अपॉन C. तो एक C कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा आंसर U इज इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर. सो दिस इज सेकेंड रिलेशन. तो फर्स्ट तो है U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, और Q इज इक्वल्स टू CV रिप्लेस करके मिल गया U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर. और देखो आल्सो U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये तो है. सो उसको स्प्लिट करेंगे, हाफ Q स्क्वायर दैट इज Q इंटू Q अपॉन C, Q इंटू Q अपॉन C. तो अभी यहां अगर आप ये देखोगे, सो दिस पार्ट Q अपॉन C, सो फ्रॉम दिस वन Q अपॉन C किया तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा. और फ्रॉम हियर Q ये इधर लिया अपॉन C इज इक्वल्स टू V हो जाएगा. तो यहां हम उसके लिए रिप्लेस कर सकते हैं. देयरफॉर U इज इक्वल्स टू हाफ Q बाय C के लिए V, सो हाफ V इंटू Q. तो ये थर्ड रिलेशन हो गया. सो टोटल वी कैन से एनर्जी U इज इक्वल्स टू फर्स्ट रिलेशन हाफ Q square by C. Second relation that is half CV square. And third relation here we got that is half V into Q. So these are the three relations for energy of capacitor. Okay. Okay. Students, now we are going to discuss the last point in the topic, and that is Van de Graaff generator. So see the diagram. What is the Van de Graaff generator? The outer covering shows that is steel vessel filled with nitrogen. In that first part, this one is denoted as P1, P2. These are two pulleys connected with belt B. Then here another one part denoted as I. It is here is iron source and it is tube. Above that there is a D curved shaped
which is nothing but dome shaped hollow conductor. Here it is denoted P, which is direct current but very high DC source, that is 50 kilovolt DC source, and it is earth. So positive terminal is connected to brush A and its other terminal is connected to M, and which is earth. Now see here, yes, steel vessel filled with nitrogen, then D, dome shaped hollow conductor, below that C, collector brush, here I, iron source, then P, that is DC power supply, P1 P2, here P1 bottom को और ये ऊपर P2 है, तो P1 P2, these are two pulleys, and M, that is earth metal plate here, and this side A, that is spray brush, and BB denoted in upward direction and downward direction, that is conveyor belt. So these are the points in the diagram. Now see the principle of Van de Graaff generator. What is the principle? So this generator is based on, first one, the phenomenon of corona discharge. Phenomenon of corona discharge. अब ये कोरोना मतलब रनिंग कोविड-19 नहीं है, ये कोरोना डिस्चार्ज, that is you can say sharp pointed phenomenon, the phenomenon of corona discharge. The second, the property that charge given to hollow conductor is transferred to its outer surface and distributed uniformly over it, which is shown in the diagram, that positive sign. So uniformly charge distributed on it. If charge is continuously supplied to an insulated metallic conductor, the potential of the conductor goes on increasing. So these are the 3 points on which the working is based. So say again, what the generator is based on: first, phenomenon of corona discharge, the property that charge given to hollow conductor is transferred to its outer surface and distributed uniformly over it, and third, if a charge is continuously supplied to an insulated metallic conductor, the potential of the conductor goes on increasing. Okay, now see the working. First, the electric motor connected to pulley P1 is switched on. डायग्राम में तो नहीं है, वो पर्दे के पीछे। यहाँ P1 पुली के पास जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी वो स्विच ऑन करने के बाद मोटर वो पुली को रोटेट करेगी एज P1 and P2 connected by the belt, so belt goes on moving. So the electric motor connected to pulley P1 is switched on, which begins to rotate the conveyor belt. Second, the DC supply is then switched on and from pointed spray brush A, यहाँ जो spray brush है ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है बैटरी का, तो यहाँ से चार्ज ब्रश पे आएगा और ब्रश से बेल्ट पे, बेल्ट इज मूविंग, सो यहाँ से चार्ज ब्रश से बेल्ट पे जाएगा and positive charge is continuously spread on the belt. The belt carries this charge in upward direction and collected by another brush C, which is at the top, and then sent to the dome shaped conductor. Then as dome is hollow, the charge distributed over the outer surface of the dome, its potential rises to very high value due to continuous accumulation of charges on it. यहाँ से पुली से नीचे का चार्ज, यहाँ जब चार्ज सी ब्रश तक आएगा तो यहाँ से कंटिन्यूस चार्ज डोम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका पोटेंशियल वेरी हाई हो जाएगा. The potential of electrode I also rises to high value.
Then the positive ions such as protons, neutrons from a small vessel containing ionized hydrogen. वो तो डायग्राम में दिखाया नहीं है, तो यहां होगा. So the positive ion such as protons, neutrons from a small vessel containing ionized hydrogen or deuterium are then introduced in the upper part of the evacuated accelerated tube. These ions repelled by the electrode eye. Already potential of the electrode eye also very high. So because of that, these ions repelled by the electrode eye and accelerated in downward direction due to very high potential. These ions acquire very high energy. These high energy charged particles are then directed so as to strike a desired target. So you can say this is working of Van de Graaff generator. अभी इसके बाद इसका पॉइंट क्या है, तो ये जो टू स्ट्राइक ए डिजायर्ड टारगेट, तो वो टारगेट क्या है, दैट इज विल सी नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, दैट इज यूजेस ऑफ जनरेटर. तो स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर. सो फर्स्ट यूज तो हमने सबसे कॉमन और मेजर यूज हमने क्या देखा अभी इसी में, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर यूज करके हम वेरी हाई पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज द मेजर use. The main use of Van de Graaff generator is to produce high energy charged particles. The energy is of the order 10 mega electron volts, that is 10 raised to 6 volt. Such high energy particles are used, first one, to carry out the disintegration of nuclei of different elements. Disintegration, so to break into different types of nuclei. So nuclei of different elements. Then second, to produce radioactive isotopes. Then third, to study the nuclear structure. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. फोर्थ, टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. सो न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं. और फिफ्थ वन डिफरेंट, दैट इज एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू स्टेरलाइज फूड एंड टू प्रोड्यूस एंड टू प्रोसेस मटेरियल. फूड स्टेरलाइजिंग और मटेरियल प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है. सो दोस्तों, these are the uses of Van de Graaff generator. Okay, now students, we will see some examples. See, first one, a parallel plate capacitor has an area 4 centimeter square and plate separation is 2 millimeter. Calculate its capacitance. Second, if the space between the plates is filled with the dielectric constant of 6.7, what will be its new capacitance? तो गिवन में एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 2 मिलीमीटर्स. सो सॉल्यूशन, गिवन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is equals to 4 into 10 raised to minus 4 meter square. एरिया हो गया. प्लेट सेपरेशन, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, which is denoted by small d. d is equals to 2 millimeter given, 2 millimeter. So 2 into 10 raised to minus 3 meter. Okay. और क्या लगेगा, what is the formula? Formula, capacity C is equal to A epsilon 0 upon D.
So A is given, D is given. Now epsilon 0. So epsilon 0, that is permittivity of the medium. So when there is no in dielectric, so epsilon 0, that is 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. So this is given data. So using the values, C is equals to area A 4 into 10 raised to minus 4 multiply by epsilon 0 की value 8.85 into 10 raised to minus 12 divided by D, distance between the plates, that is 2 into 10 raised to minus 3. Cancelling here, get 2. So C is equals to, multiplying by 2 here, we get 2 5s are 10, 2 8s are 16, 17.0, 17.70 into 10 raised to, here 10 raised to minus 3 get cancelled from here, 10 raised to minus 1, so 10 raised to minus 13, that is equals to 1.77 into 10 raised to minus 12 farad. और अगर आप ये ड्रॉप करोगे 10 raised to minus 12, तो C is equals to 1.77 पिको फैरड ऐसे भी लिख सकते हैं. ये 10 raised to minus 12, that is denoted as pico. So capacity C is equals to 1.77 picofarad. That is the answer. So calculate the capacitance for this. This is the answer. Now second, if the space between the plates is filled with dielectric constant 6.7, what will be its new capacitance? तो अभी उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? C is equals to A epsilon 0 K upon D. So that is C is equals to, अभी ये जो A epsilon 0 upon D, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है here. So that is 1.77 into 10 raised to minus 12 farad multiply by K. K की वैल्यू खाली ऐड करना है. So that is 6.7. तो इसका और इसका प्रोडक्ट ये इधर मल्टीप्लाई होने के बाद, so C is equals to 1.77 multiplied by 6.7 into 10 raised to minus 12. So product of this 1.77 into 6.7, that is 7.90 into 10 raised to minus 12 farad or 7.9 picofarad. This is the answer for second. Second example, in a capacitance of 20 microfarad, the distance between the plates is 2 millimeter. If dielectric slab of 1 millimeter width and a dielectric constant 2 is inserted between the plates, what will be its new capacitance? So first one, initial capacitance is given. C is equals to 20 microfarad, that is 20 into 10 raised to minus 6 farad. The distance between the plates is 2 millimeter, small d, 2 millimeter, that is equals to 2 into 10 raised to minus 3 meter. If the dielectric slab of 1 millimeter width
स्लैब की विड्थ थ्योरी में हमने देखा था, उसके लिए नोटेशन लिया था टी, सो टी इज इक्वल्स टू थिकनेस कितना 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर that is 1 into 10 raised to minus 3 meter, and dielectric constant 2, k is equals to 2. Inserted between the plates, what will be its new capacitance? So let us denote as C dash. So this is given. Now formula, C is equals to A epsilon 0 upon D, and C dash is equals to A epsilon 0 divided by D minus T plus T by K. ये दो फॉर्मूला है थिकनेस के लिए, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है व्हेन any slab or dielectric material is inserted with thickness T, then this is the formula. अभी इसकी वैल्यू तो दी है कैपेसिटेंस C, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, C डैश अपॉन C लिया तो इस दोनों का रेशियो मिलेगा, सो देयरफॉर C डैश अपॉन C इज इक्वल टू, C डैश मतलब A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K डिवाइडेड बाय C मतलब ये, सो वी कैन राइट एज इनवर्सली मल्टीप्लिकेशन D अपॉन A एप्सिलॉन 0. तो ये एप्सिलॉन 0 तो A इंटू एप्सिलॉन 0 ये कॉमन ही रहेगा, सो इट गेट कैंसल, सेम है. सो देयरफॉर C डैश अपॉन C that is given initial capacitance 20 into 10 raised to minus 6 is equals to D distance 2 into 10 raised to minus 3 divided by D 2 into 10 raised to minus 3 minus small t thickness 1 into 10 raised to minus 3 plus T by K, that is 1 into 10 raised to minus 3 divided by K, K given as 2. तो ये अभी 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 इधर आएगा, सो C डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 divided by 2 into 10 raised to minus 3 minus 1 into 10 raised to minus 3 plus 1 upon 2, that is 0.5 into 10 raised to minus 3. यहां से हम 10 रेज़ टू माइनस 3, 10 रेज़ टू माइनस 3, 10 रेज़ टू माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं. Therefore C dash is equals to, ये हो जाएगा 2 into 20 that is 40 multiply by 10 raised to a minus 9 divided by, यहां से 10 रेज़ टू माइनस 3 कॉमन मिलेगा, सो 2 minus 1 plus 0.3, 2 minus 1 plus 0.5 multiply by 10 raised to minus 3. So here again C dash is equals to 40 into 10 raised to a minus 3 इधर कन्वर्ट होने के बाद 10 raised to minus 6 divided by 2 minus 1 1 1 plus 0.5, so 1.5, that is 400 divided by 15 into 10 raised to minus 6. Therefore C dash is equals to
So here 15 ones are 15, 15 twos are 30. So 26.6 into 10 raised to minus 6 farad. Or if you drop this, it becomes 26.6 microfarad. This is the answer. So the new capacitance will be 26.6 microfarad.